रात गई तो बात नई, शुरू कहाँ से हम करे, धूप में भी छाव लगे, भीड़ में भी तू ही दिखे। ये अनकही दोस्ती दिल की डोर से सिल रही, मुस्कुराए तू वहाँ, हंसी मेरे चेहरे पे खिल रही। रफ्ता रफ्ता मैं तेरी ओर यूं चलूं, रफ्ता रफ्ता मैं एक कदम यूं रखूं तेरी ओर। So nice. Thank you. जितना सुंदर गाते हो उतनी सुंदर आप सीटी बजाते हैं। Thank you. So nice. This is the Rafta Rafta team for Amazon Mini, which is here in the Mirchi Studios. मेरा नाम प्रेरणा है. We've got Bhuvan Bam, we've got Shrishti, Ganguly Rindani, and we've got Raghav Miyatil. 4-5 लोग क्यों बैठे हैं? We have Neil Nitin Mukesh and Shrishti. You can just say Shrishti. चलो Shrishti. अब आप तीनों के लिए सवाल है, how difficult was it to make your mark in the industry? तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है? मार्क अभी आएगा। अभी आना बाकी है, अभी क्या ही किया है अभी? कुछ आपको नहीं लगता कि बोलता आपने है कुछ उखाड़ा है? कुछ नहीं अभी क्या है आपको आबादी? डिसऑनेस्ट आंसर्स चाहिए तो ले लो। 140 करोड़, Modest 140 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। कितने बचे? 138। कहाँ है टाइम उसमें अभी? जब पर शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड डोमिनेशन। अबे अपनी आबादी। अरे पर वो ये नहीं बोल रही कि वो तेरे को पूछ रही है अबाउट योर मार्क इन द इंडस्ट्री। यू हैव मेड अ मार्क इन द इंडस्ट्री, एटलीस्ट अ मार्क। मेरे हिसाब से उनको लगता है कि वो मार्क ही नहीं है, वो अब तक सिर्फ कॉमा है। तो डॉट है वो, तब बनेगा चंद्रबिंदु, जब चंद्रबिंदु है अभी। जो बाकी जो हाँ अभी ये टाइम मैथ समझ गया मुझे वैसे। अभी time है। डिफिकल्ट है। सृष्टि सेम See how I would define mark. A mark in the industry is where I feel like I've done some work that is credible and that people have watched it and come up to me and said I've done good work. So for me, I would define that as me making some progress in the path that I've chosen. And it has to be difficult, otherwise it's no fun. Yeah. I am still struggling. I'm still trying to find that or trying to reach where I've wanted to all my life, and it'll happen, and I'm not putting too much pressure. But yeah, I think it's been very tough. It's been, but I think I've learned how to deal with the rejection, and now I think I'm okay with somebody telling me that I don't fit a part or I'm not. Now I've reached a point where अभी चलता है. अभी तुम मुझे बोलो कि नहीं आप suitable नहीं हो. We have locked someone else. I feel bad for like 5 minutes and then I just snap out of it because that's an actor's life, to face rejection and to get out of it, because if you dwell in it, गए काम से. रफ्ता नहीं हो सकता. It has to be super. It has to be instant. fast, and that comes with a lot of rejections. So yeah, I think. Wow, thanks. I don't think this is सिर्फ actors के लिए, you know, sort of, मतलब जो आपने कहा है ये काफ़ी सारे segments और काफ़ी सारे situations को apply करते हैं, so thank you. राघव, क्या कोई एक ऐसा mark आपको लगता है आपने इंडस्ट्री में कर लिया, या फिर you're still waiting for that one day जब आपको Golden Globes या Oscar या Grammy या ऐसा कुछ? See, I think I agree with Bhuvan also to an extent, and with Shrishti. I feel I look at my career as like something I want to do for the rest of my life. Even when I'm 60, 80 years old, I want to still keep writing songs because it's just something I really do for myself. I really enjoy it. It's a skill that you keep developing. It gets more and more exciting when you can keep playing with it. Yeah. So that's what it is. Like for me, I don't know if that's one achievement where I'll be like, aha, this was amazing. Now I have arrived. Like it's just about constantly doing it because it genuinely excites me to be in this industry. I think from talking about hard, I would just want to say that I feel like
especially in the entertainment/music industry, I feel access to resources and mentorship is very hard. There are so many things that can happen so much easier, like when you start recording music, figuring out how to release a song, etc., which sometimes takes you 4 years to figure out, but ideally it should be 3 months. So those things, I feel like that access, which is getting much better, much faster, and I feel like I actively sort of do that for people who sort of did it for me. I'm sort of like working with lots of young artists and trying to make that happen so that their lives are, it's just faster for things that shouldn't take you that long to sort of get a hold of. You know? Yeah. What a lovely bunch of everybody needs to holistically sort of get better at and you know, succeed. Nice. It's like a nice community that you guys are constantly, without even knowing, building, which is great. What were the issues faced to be where you are today? I think more than issues, it's a new industry, it's a whole new different world, right? So you have to understand the nuances of it. There are so many things. It's about skill, right? I feel like when you start a job, you don't expect to become a CEO in 3 years, right? But I feel like with creative industries, everybody has that ambition at least to get onto the top of the pyramid. But there are people who've been doing it for so long. And I feel like that's what it is. It's just about understanding, and that takes its own sweet time. And like I said, access to just resources, access to information that should be widely and easily available, which isn't the case. And I think it's getting much better from back when I started. Shrishti, कोई issues जो आपने face किए in order to make it today? Of course आपने बताया अपने rejection phase, etc. सबके बारे में, और rejection phase क्या है, कभी खत्म ही नहीं होता, because if in case you don't suit a part, you don't suit a part. Correct. But ऐसे कोई issues that really shaped Shrishti what she is today? I feel like as an actor, especially as a female actor, you have to be extremely comfortable with your body. To be able to be in front of the camera and just be like just unabashedly yourself, it's extremely tough. And for someone like me who has gone through a lot of body issues when I was a child, I think for me to face the camera was a huge struggle, and then to be judged on basis of how I look, and any small flaw would be pointed out. So I think that was the biggest issue for me, that I feel somewhere I've overcome now. I'm still getting there, but I feel like I have learned how to accept myself, my body, because everybody's going through it, honestly. Everybody has their own issues. Nobody's really looking at you. They're dealing with their own miseries. So I think I've come to realize that and accept myself the way I am. Every time you're saying something, it's inspiring another bunch of women and men and gender fluid ways of everywhere. I think that's just phenomenal. Sweet, thank you. It really is. Bhuvan, issues that you faced to come here, to be where you are, and what you are today? I think whatever Bhai said and whatever she said, I was really thin. बहुत ज़्यादा, बहुत बेहद, मतलब इस हाइट के साथ I was 53 kgs, तो वो दिखता था कैमरे पे. और आलस भी है, जान ही रहा है, तो कैसे वज़न कैसे बढ़ाएं, स्लीप शेड्यूल नहीं है, ईटिंग शेड्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो वो हर शूट से पहले लेयर ऑफ क्लोथ्स. मेरे को याद है ढिंडोरा दिल्ली की पीक गर्मी में, मुंबई की पीक गर्मी में हम लोग शूट कर रहे थे, और 3 लेयर मैं पहन के शूट कर रहा था ताकि थोड़ा मैं दिखूं, हल्का सा दिखूं कि शरीर में मांस है. बट फिर लॉकडाउन आ गया, वो वेट लॉकडाउन का ऐसा लगा, मैंने कहा ये नीचे नहीं आना चाहिए, इसी पे काम करते रहो. और उसके अलावा प्रोडक्शन, जो अभी बीबी के प्रोडक्शन है, वो एक इट्स अ बिगर ड्रीम फॉर मी. तो उसके इश्यूज़ हमें तब पता चलते जब हम शूट कर रहे होते हैं. शूट के बाद मुझे लगता था हमारा काम है लिखो, एक्ट करो और मूविंग ऑन इन लाइफ. ऐसा है ही नहीं. एक प्रोजेक्ट किया साइन, उसके साथ रहो अब 2 साल, जब तक रिलीज़ होके लोगों तक नहीं पहुंच जाता. वो इश्यूज़ हैं जीवन में, अभी उसको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक लेट गो नहीं सीखा यार, आर्ट ऑफ लेट गो नहीं सीखा है. और इस फील्ड में अगर कोई है, कोई देख रहा है, तो आपको आर्ट ऑफ लेटिंग गो बहुत जल्दी सीख लेना पड़ेगा. कुछ नहीं पता ना कब क्या चल जाए, कब क्या नहीं चले. कुछ नहीं चला तो बहुत दिल लगा लेते हैं ना आप किसी चीज़ के साथ, फिर वो एक्सपेक्टेशन बड़ी चुभती हैं. सो आई थिंक ये लेटिंग गो, ये सब पहले नहीं समझ आता था. तो पहले तो बड़ा ही दुखड़े होते थे. रिजेक्शन, कोई
सुनने को राज़ी नहीं है, मना कर रहे हैं। मतलब 10 लोगों को जाके ढिंडोरा सुनाई तब जाके यूट्यूब पे बनाने का सोचा। इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। हाँ, क्योंकि वो आइडिया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, किसी को लग रहा है ये कैसे कैरेक्टर्स होंगे, 10 कैरेक्टर कैसे प्ले करेगा ये। तो फिर हमने कहा यार अपनी कश्ती के हम खुद ही सवार हैं, हम अपनी कश्ती में, तो कर लेते हैं, खुद बनाते हैं, यूट्यूब से पूछते हैं साथ देंगे क्या। तो रैंडम फ्लाइट्स करा के गए US, मेल्स लिखे, बाहर खड़े रहे उनके ऑफिस के, वो आए, उनको बोला कि मैम एक शो बनाना है ढिंडोरा। कहती भेजो, मेल भेजो। वापस आए 3 घंटे में, वापस आए, मेल बना के प्रॉपर डेक भेजा। तब उनको कुछ समझ आया, तब उन्होंने बोला देखो इतने पैसे हैं, बना सकते हो तो बना दो। हमने कहा बिल्कुल, हमने कहा यही तो चाहिए था कि कोई प्लेटफॉर्म दे दे बस। तो ये सब चीज़ें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। Wow. The last question for this podcast. Did you achieve what you had dreamt of? जो आपने नहीं। Actually, I think इस सवाल का जवाब शुरुआत के कुछ आंसर्स में मिल गया था कि अभी तक journey is long, जिंदगी is लंबी, and of But course. you know, I feel like I've achieved what I haven't dreamt of, Okay. which is just sanity. Honestly, I remember when I was in school, a teacher, one of the teachers, English teacher, कुछ तो पूछा मुझे क्या बनना है तुम्हें बड़े होके। मैंने बोला खुश, बस मुझे खुश रहना है। और वो एक सपना था, very, मतलब obviously I was not as evolved as a child to know what happiness is. Maybe you were. I don't know. But I think I've reached a point where I'm happy. I may have not achieved anything in terms of my career, what I had thought maybe I would, but I have found happiness It's in tough. my life. It's tough to find happiness. It's easier to find success. Because I stopped expecting much. I started expecting very basic things in life because eventually that's all you need. Yeah. Good, yeah. मैं ऐसे I wish सबके पास में ये energy हो जाए so that it's just easier. Actually, one last question. I'd like to know this क्योंकि कितने सारे लोगों के लिए आप idols हैं. Who is that one person that inspires you? Raghav, we'll start with you. I think multiple people. I think my mother has been a very, very big force in my life. Been through some really hard times. Yeah. And just looking at her, like even today, like I feel like the kind of energy and the discipline that she has, that's something I still work on and struggle with. कि रोज आप 6 बजे उठ रहे हो और अपनी life एक certain way में कर रहे हो. I think that really inspires me to just have that work ethic, right? And I feel काफी सारा काम मेरे को आज भी I might not be the most talented person in the room. What are you saying? But I feel like my work ethic also gets me places, and I feel like that's honestly what I've seen growing up, right? Yeah. Of working 16 hours a day to make ends meet or whatever. I think that's something that I take. My mom, I think musically lots of heroes, right? Grew up listening to metal and like hard rock music, so I think as a guitar player, whatever, John Mayer is probably my biggest inspiration as a musician. But I think in life, I think my mom would be a big one. Fair. Lovely. Shrishti? It doesn't have to be a celebrity, right? Somebody in my life. Yeah. Same. Not his mother. And John Mayer. But I'll tell you, because she has lived such a holistic life and in such a weird way. Like she had the strength at 21 to leave her marriage, start life on her own, having not completed her studies or anything. She made it somehow, and then at 50 she found love again and got married like last year. So I think her journey is so inspiring, and that actually through her I realized कि जिंदगी में सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहिए खुश रहने के लिए. Eventually, no matter what you succeed, how much money you earn, that all is fun. I love money, but eventually what you actually seek from your core is just being around your family, around your dog, just watching a movie and eating popcorn and just chilling. Yeah, that's all. Simplify it. Yeah, बस chill करो यार. यार नहीं, मुझे थोड़ा पैसे कमाओ फिर चिल करो, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो चिल भी नहीं कर पाओ. तो पैसे कमाओ अच्छे से. चोरी कर लो जैसे भी. हाँ, चोरी भी कर सकते हैं. ये प्लीज मैंने नहीं बोला है. Who's that one person that inspires you, Bhuvan? महेंद्र सिंह धोनी. जी. कुछ मेरा उस स्पोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है. वो जब से रिटायर हुए मैंने देखना भी कम कर दिया है बहुत क्रिकेट. बट ऑन एंड ऑफ द फील्ड, मतलब क्रिकेट तो चलो खैर है ही,
बट वॉट ही इज़ ऑन फील्ड इट इज़ द मंत्रा फॉर लाइफ. आप सोचो पूरा देश, पता ही क्रिकेट कैसा है हमारी कंट्री में, कि अगर कोई क्रूशल मैच अगर हार गए फिर क्या होता है पता ही है, जीत गए तो क्या बना देते हैं पता ही है. उस प्रेशर के साथ दोनों हाथ पीछे रखे आराम से बात करते हुए सबसे, वो चाहिए लाइफ में. कि इतनी एक्सपेक्टेशंस होंगी आपके साथ लाइफ में, इतने सारे लोग जुड़ेंगे, इतने सारे लोग पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उन 1000 में से 500 तो गाली दे रहे होंगे, उसके बावजूद दोनों पैर पे खड़े रहो, आंखों में आंखें डाल के बस डिसीजन लेते रहो. सही गलत तो खैर जब होगा तब पता चलेगा, बट डिसीजन लेने की हिम्मत और इम्पल्सिव ना होकर डिसीजन लेने की हिम्मत, ये तो मैं बड़ा सीखा हूँ, कोशिश तो करी हूँ. यार मुझे बहुत मजे आ गए हैं. ठीक है, वेलकम टू आवर टेक टॉक. जिन्होंने लाइफ में अपेरेंटली कुछ नहीं उखाड़ा है वो लोगों को लाइफ एडवाइस दे रहे हैं. अपेरेंट है ना, लाइफ एडवाइस आप तीनों से मिली आज. और जेन्युइन यू नो कई सेलिब्रिटीज आते हैं और मैं ये मतलब देयर इज नथिंग टू सॉर्ट ऑफ शेयर एंड मे बी जस्ट से कि आई फ्लैटर यू, बट आज सच में बाकायदा सच में इमेंस प्लेजर, ऑल माइन. Ours also, we also got. And with this podcast and with the stuff, again coming back to Rafta Rafta, watch it on Amazon Mini. Hi, this is Bhuvan Bam. You're watching and listening to me on Mirchi Plus. It's hot. Hi, this is Srishti Ganguly. You're watching and listening to Mirchi Plus. It's hot. Hi, this is Raghav Miatal. You're watching and listening to Mirchi Plus. It's hot. Thank you so much. Also, one final message of you can watch Rafta Rafta on Amazon Mini TV. नहीं हमें पता है आप वो तो समझ गई. जस्ट Amazon shopping app. जस्ट फॉर Free. चल ये तो बताएं कि मैं बता देती हूँ. देखिए गाइस, ये जो लोग हैं ये Amazon Mini TV पर हैं. अगर आप Amazon का शॉपिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं आप बिल्कुल मुफ्त में भुवन बाम, सृष्टि और राघव को आप देख नहीं सकते, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं. So yeah, watch it guys and please give all the love like you've always been giving and make them the best because they are the best. Thank you. Thank you. Thank you.